StudyIQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। Hi guys, my name is Divakar Bothra. General studies is like jungle of facts. The paper 2 aspects, that is specially I'm talking about the aspects of governance. If you look into governance, the number of questions coming from governance have been consistently increasing. Although in 2021, as the 22 mains, there were roughly around 2 or 3 questions जो directly governance से connected है, but there are roughly 6 questions जो population, globalizations, वो वाले globalization Indian society, these aspects से directly connect किए जा सकते हैं. कैसे? Social justice को लोग governance से अलग study करते हैं, but technically social justice largely is an important aspect of governance itself, because if the society is having a social justice, only then that is there is possibility of largely practicing good governance in society. This video would remain short of roughly 10 minutes, but in these 10 minutes I'll give you that content which I bet after this video, even if you Google it, you will not find it anywhere. The goal of this video is just to tell you कि 1947 से लेके 2022 तक what has been the change in the nature of governance. If you look in 1947, इसको roughly मैंने divide किया है 1990, 2000 and 2022 or 2020. I've just divided this entire thing in order to make you understand the evolution of governance which has taken place in the Indian governance systems or in the Indian political systems. 1947 mein the goal of the country was largely to become independent. Our major focus was largely that the country should be ruled by the people themselves rather than a foreign rule largely dominating. The only goal here was to largely establish गवर्नेंस. गवर्नेंस होता क्या है? गवर्नेंस यूएनडीपी ने डिफाइन किया इन द कंटेक्स्ट ऑफ स्टेट दैट इट रेफर्स टू कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल and economic resources of the country. So technically in 1947 what our goal was to largely establish governance itself, and this is a very simple understanding given by United Nations Development Program, that governance refers to control over economic, political and administrative resources of the country. But as the society progressed, as the new ideologies started coming up, we saw that the mere governance was not largely considered as sufficient, and hence the system from 1990s onwards started focusing on what we call as the good governance. That now our goal was that merely governance is not sufficient, rather than the governance should largely be good governance. In simple terms, the good governance refers to, in the simple most terms, citizen-centric governance, which in Indian context can be called as सबका साथ, सबका विकास and सबका विश्वास. अगर इंडियन टर्म से समझना है तो दिस इज व्हाट द मीनिंग ऑफ गुड गवर्नेंस स्टैंड्स. ऑल्दो कभी डिस्कस करेंगे इन डिटेल के हाउ गांधी अंडरस्टूड द पर्सपेक्टिव्स ऑफ गुड गवर्नेंस फ्रॉम कौटिल्यन पर्सपेक्टिव और अर्थशास्त्र, हाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुड गवर्नेंस फ्रॉम डेविस एंड मूरेस पर्सपेक्टिव, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुड गवर्नेंस, एक्सेट्रा. 1990s therefore we shifted from governance to good governance, as sirf governance was not considered, the governance was considered to be more citizen centric. That has to be the goal of state. But obviously as the society further progressed, there comes globalization here.
यहाँ पे अब इंडिया started globalizing. There was LPG reforms in 1991, which started yielding results from 2000 onwards. Y2K revolutions, information technology revolutions, and as a result, because of the development of information technology, which was boosted because of the process of LPG, even the good governance now was not considered as sufficient, as now the demand was for e-governance or electronic governance. The World Bank has defined electronic governance as use of ICT in governance. कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यूज करना गवर्नेंस में इज इक्वल टू ई गवर्नेंस. वर्ल्ड बैंक यूजेस आईसीटी, बट नॉर्मली अगर आपको अभी पूछूं ई गवर्नेंस के एग्जांपल्स, 99% ऑफ यू वुड गिव मी द एग्जांपल्स ऑफ ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट्स लाइक consisting of web-based projects. But information communication technology consists of telephones, mobile phones, radios, televisions, internet, etc. So when a question on e-governance comes, you should not be restricting only to the web-based projects or internet-based projects, rather than write in detail about the various approaches of electronic governance in India. This e-governance also evolved in India, but here I am only concerned about the evolution of governance. So technically, good governance से हमने shift मारा electronic governance में. इस इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस को एक और तरीके से लिखा जाता है कि ई गवर्नेंस का मतलब था, सेकेंड एआरसी ने बोला स्मार्ट गवर्नेंस. एस इज फॉर सिंपल, एम इज फॉर moral system, accountable, A is for accountable, R is for responsiveness, and T is for transparency. So good governance, जो citizen centric governance है, we shifted to electronic governance, which now is considered as smart governance. यहां तक अगर आप कंटेंट देखोगे, अगर someone is well read और अच्छे से रिसोर्सेज फॉलो किए हैं, तो ये कंटेंट आपको बहुत सारी किताबों में मिलेगा. बट ये जो 2020 है, what do you think that electronic governance today, is it sufficient या कुछ और चेंज करना पड़ेगा? अरे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी 4.0 हो गई है आज, मूवीज के भी 2.0 वर्जन्स आ रहे हैं, तो कैसे सिर्फ ई गवर्नेंस सफिशिएंट हो जाएगा? इन 2020 अगर मैं नीति आयोग को यूज करूं तो नीति आयोग टॉक्स अबाउट शिफ्ट फ्रॉम ई गवर्नेंस टू मोबाइल गवर्नेंस. लेकिन ये इंप्रेसिव है, नो डाउट. इलेक्ट्रॉनिक नीति आयोग का मोबाइल गवर्नेंस पे व्हाइट पेपर आया हुआ है, बट इससे ज्यादा इंप्रेसिव कैसे होगा? मैंने ही मेरे इसी प्लेटफॉर्म पे एक वीडियो में बताया था कि नोवेलिटी आनी चाहिए कंटेंट के अंदर. ये नोवेलिटी कहां दिखेगी? जहां पे आप अपनी इंटेलेक्चुअल ट्रेट यूज करो कि इज जस्ट बीइंग स्मार्ट इज सफिशिएंट और वी लार्जली नीड्स टू हैव समथिंग. तो आई हैव क्रिएटेड माय ओन एक्रोनिम which will help you to write a better answer suppose if a question appears on this perspective. Today what we require is smart plus initiative. स्मार्ट की एक्रोनिम ऑलरेडी आपको पता है, सेकेंड एआरसी ने जो बोली, दैट इज सिंपल, मॉरल, अकाउंटेबल, रेस्पॉन्सिव एंड ट्रांसपेरेंट. प्लस मैंने क्रिएट किया है ऑन द बेसिस ऑफ वेरी शॉर्टकमिंग हाईलाइटेड बाय सेकेंड एआरसी इन देयर ई गवर्नेंस रिपोर्ट. और यहां प्लस का मतलब क्या है? P इज फॉर पार्टिसिपेशन. कि इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस शुड नाउ बी फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिसिपेशन. बहुत बार जब आईआरसीटीसी आप यूज करते हो तो इतनी ज्यादा ग्लिचेस है उधर के कई बार सिटीजन्स को बहुत डिफिकल्टी होती है प्रोजेक्ट्स यूज करने में. तो जब भी कोई गवर्नेंस प्रोजेक्ट बनाया जाए, सिटीजन्स का व्यू पॉइंट कंसीडर किया जाए कि क्या सर्विसेज वो चाहते हैं, किस तरीके से चाहते हैं. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कि टेक्निकलिटी सिटीजन से डिस्कस करनी है, वी आर टॉकिंग अबाउट कि उनकी इश्यूज क्या है, क्या ऐप कैसी होनी चाहिए, वो सारी पार्टिसिपेटिव तरीके से बने. L is for lean system. लीन का मतलब ये है कि सिस्टम शुड बी वेरी सिंपल. कभी एप्पल की वेबसाइट पे विजिट करो,
एकदम लीन सिस्टम है. इट्स द इंटरफेस इज सो स्मूथ. दो सिस्टम शुड बी मेड मोर लीन इन नेचर, नॉट डबल हायरार्कीज विच शुड बी देयर. यू इज फॉर यूनिवर्सल, कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं वो यूनिवर्सल हो. यूनिवर्सल का मतलब क्या है? आज अगर हम देखते हैं तो बहुत सारे स्टेट और सेंटर के प्रोजेक्ट्स को रन करते हैं इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस के लिए कि यूनिवर्सल एक ही सेम चीज के लिए मल्टीपल प्रोजेक्ट्स है. सीपी, ग्राम, प्रगति और बहुत सारे ग्रीवेंसेस रिड्रेसल मैकेनिज्म है, तो सिटीजन कंफ्यूज हो जाता है. एक प्रोजेक्ट एक चीज के लिए बनाया जाए जहां पे सेंटर और स्टेट का कोऑपरेशन हो. ई परिवहन is a very good example in recent time, जहां पे state and center have come together in order to largely provide the very RTO services to you 24/7 at your comforts of homes. S is for self-learning projects, कि ये प्रोजेक्ट सेल्फ लर्निंग होने चाहिए. टेक्निकली you are living your life today by surrounded by various passwords. सेल्फ लर्निंग प्रोजेक्ट्स होते हैं वो जहां पे अगर कोई इश्यूज है तो दे ऑटोमेटिकली टैकल इट अप. एग्जांपल देता हूं, कई प्लेटफॉर्म्स में आपने फोटोज या सिग्नेचर्स अपलोड किए होंगे, उधर दिया हुआ रहता है लेस देन 4 KB होना चाहिए, 5 KB होना चाहिए. बार बार आपको स्कैन करके लगाने पड़ते हैं. सिस्टम में क्या हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है ये बिल्डअप करने के लिए कि हमने स्कैन किया और सिस्टम ऑटोमेटिकली उसको उस रिक्वायर्ड चीजों में पुटअप कर लेता है. अरे यार, एलॉन मस्क ने ऑटोमेटिक कार बना दी. आर वी नॉट इवन एबल टू यूज दिस सेल्फ लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? दिस सेल्फ लर्निंग आई हैव बोरोड फ्रॉम वन बुक कॉल्ड एज 21 लेसन्स फॉर 21st सेंचुरी. नोवा हरारी की किताब है, वहां पे वो डिस्कस करते हैं, तो मैंने उसको यूज किया है. सो टेक्निकली in 2020 merely e-governance is not sufficient, just like in 2000 merely good governance was not sufficient. Today what we require is smart plus governance in order to ensure the system remains citizen centric. इस तरीके से आंसर्स एक्चुअली लिखे जाते हैं. सो ये वीडियो मेरा बनाने का एक रीजन था कि पूरे गवर्नेंस की एक इवोल्यूशन आपको सिंपल तरीके से समझाई जाए ताकि आप नोट्स बना के यू कैन कीप इट, कि कभी अगर वे फॉरवर्ड आए, कभी कोई क्वेश्चन आए, इवोल्यूशन पे आए या डिस्कशन पे आए, यू एटलीस्ट हैव द डेटा विच शुड बी देयर इन योर आंसर्स. थैंक यू सो मच गाइज. हैप्पी स्टडिंग. StudyIQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.